can see is that this is the male skin with the male reproductive system, human skin with the male reproductive system basically. And if I just maximize this model a little bit over here, so you can see the localization is more or less in the lower abdominal region. तो जो entire male reproductive system होता है ना, वो basically lower abdominal region या lower that we have seen. Now let us just move on to the main part of the male reproductive system. उसके structure पे हम move on करेंगे. And we will see that how does it exactly look like. So this is the structure that you can see over here. And basically, isme we will be talking about its different components. All right, we will be seeing that what are the different components and what are the different glands or ducts that are primarily being present in this male reproductive system. So let us just have a look. So basically, जो सबसे important जो part होता है male reproductive system में वो हो जाएगा कि it's it's testis. So we will start with the testis part. So I'll first label out all the things so that the things will be clear to you. I'll just show you the different parts and the different components over here. So yeah. So this structure, which you can see over here, this represents the testis, which is the main male reproductive organ of the male reproductive system. And we can use different tools as well for showing this part or showing this model like this, for example. So this is the testis part, which you can see over here, and this part is considered to be as the epididymis one. So this one is the epididymis. It's didymis. Epididymis. Then if I just move this model a little bit like this, or we can just move this model a little bit over here like this. Yeah, so this back portion which you can see over here, this represents the connecting tube, which is directly coming from the epididymis, and that is your vas deferens. So this becomes your vas deferens, all right, and this becomes your seminal vesicles, which are the accessory glands which helps in the secretion of semen or which helps in the formation of semen, you can say. This becomes your prostrate gland. We will be first labeling all the things, and then I'll make you people show the individual components through different slicing tool as well. So this is the prostrate gland, which is also one of the important glands. This is the case. Now, preceding to the prostrate gland, if we are going to see like this, basically, now let me just remove all these parts and move this model a little bit like this over here. So you can see that if I just slice out this part like this, yeah, this part. So you can see that this structure, which you can see, is the urethra. This is the urethra, and this one, which you can see, is the urinary bladder. So that is the case. So this basically indicates that all these components, whether it's accessory duct or accessory gland parts, we will be discussing all these things in detail now. All right. So they are the connecting components through which whatever the sperms that are being produced from the testis, that वो transport होके ultimately फिर male body से बाहर आते. So these are all the different components. The purpose is to make you people show कि कैसे अलग-अलग components connected होते हैं and unki how they are useful in transferring the process. So that is the case. We will just bring back all the components together like this. And this component becomes your penis, and this becomes your glans penis part. This we know it. This is your glans penis. All right. So these are the important components that you have seen of the male reproductive system. Now let us just take a look on the
next component. So this is the source that has been taken from the NCERT, all right. And as you can see over here, that testis is primarily located in your lower abdominal region. So if I just wait, if I just remove this part, like, yeah. So if you just look into the location of the testis, so you can see that it is primarily located outside the abdominal cavity, and that too in a pouch-like structure, which is called as scrotum. All right. And the reason for that, its localization is inside the scrotum, is that scrotum actually helps in maintaining the low temperature in the testis. Human body have a temperature of around 36.5 to 37 degrees Celsius, but for the process of spermatogenesis over here, which means the sperm formation, it is very much necessary that the temperature should be as low as 34.5 to 35 degree Celsius. That means 2 to 2.5 degrees Celsius. So that's why it is contained in the scrotum, and this question has been asked in your NEET examination as well. Now, when you look into the shape of the testis, or it's usually oval in shape, and length is 4.5 centimeter and widthness is 2 to 3 centimeter. So this is the case. So this we have all seen. Now, we have seen testis as an individual component, but what about the other components? So other components basically includes accessory ducts, accessory glands, and the external genitalia. So we will be discussing about this as well in the coming slides. All right. Now, one thing which is before coming to this part, we can just use this like model. We will be coming to this model, another model. Yeah. So this is another model which you can see over here. So basically, my purpose of showing this model is that this is a section of seminiferous tubule which you can see on your screen. All right. And seminiferous tubule जो होता है वो testis में ही localized होता है. And if you just go back, all right, I'll just show you that each testis, what is the function of testis is that the testis is the main site where the sperms are formed. All right. Now each testis has around 250 compartments consisting of lobules, and all those lobules, they primarily form this one. They are responsible for forming they consist of highly coiled seminiferous tubules. Now why seminiferous tubules are important? Because seminiferous tubules are the main site of sperm formation. So they are the main site of sperm formation. That's why we are going to study about the section as well as the model of the seminiferous tubules as well. So this we will be seeing in that. Now these are the different cells, but individually we will be seeing that what are the different cells that we will be talking about. Now see, so basically I'll just first label all the components so that it becomes easy for you people to identify, and then we will individually see all those things. See, so this is your sperm. This becomes your, just a second. So this is basically your sperm. Then this is your spermatid. These are basically the various, the formation of sperm is in a sequential step. The first and foremost thing to note is that, जो sperm का formation होता है ना, वो पूरा एक sequential step में होता है. So that has to be kept in mind कि ये कई सारी stages से होके गुजरता है. All right. Then this becomes your secondary spermatocytes. This is your secondary spermatocytes. This is your secondary spermatocyte. This becomes your primary spermatocyte over here. So this is the case, primary spermatocyte. And इनके जो mother cells होते हैं, that means the male germ cells, this one is called as the spermatogonium. यानी कि वो important cell जिसके through ये सारे cells बने हुए हैं. All right. And of course, this one becomes your Sertoli cells.
Now why this is important, I'll tell you regarding that also. क्यों हम लोग ये सारे cells को पढ़ेंगे, because ये सारे cells ही important हैं that represents the process of spermatogenesis. Without studying these cells, you won't be able to study all those processes. All right. Now, since this is a section of seminiferous tubule, all right, which is found, the location is inside testis. ठीक है. तो अब हमें जो इम्पोर्टेंट चीज नोट करने वाली है वो ये कि जो भी पूरा का पूरा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उसके दो पार्ट्स हो जाएंगे. एक हो जाएगा ये स्पर्मेटोगोनियम, विच इज द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और दूसरा हो जाएगा ये सर्टोली सेल्स, विच आर द important cells. Now, this spermatogonium is going to give rise to these cells like this. So the sequential steps, if you are going to see, तो sequential steps ऐसे रहता है. तो पहले spermatogonium रहेगा, and then there is your primary spermatocyte, then secondary spermatocyte, spermatid and sperm. We will be seeing all these parts, but in this model, what is important to note कि हमें बस अभी देख लेना है क्या है चीजें कैसी हैं, functions हम इसके बाद. Now ये जो spermatogonium आपको दिख रहा है, it is very much close to this Sertoli cells. Now these Sertoli cells, they are primarily meant for providing nourishment to the male germ cells. Spermatogonium जो कि male germ cell होता है, इनको ये nourishment provide करने का काम करते हैं. All right. Now let me just tell you individually about using the different tools. अब ये कैसे दिखेंगे? So if we just can use this part, can we just remove this part and yeah, like this. You can just drag this part as well. So you can see कि इस पूरे component में अगर हमें दिखा तो इसके दो components हो रहे हैं जिसमें the entire things are getting dispersed. ठीक है. एक तो ये पूरा का पूरा cell जिसमें हमारा ये पूरे cells जो आपको आ रहे थे, तो जिसमें कि आपका spermatogonium हो गया, male germ cells हो गया and all those things हो गया, सब primary spermatocytes, secondary spermatocytes, everything was getting notified. और एक इधर जो आपको दिख जाता है वो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो ऊपर की तरफ, that is our sperms part. So individually if we are going to see like this part, like see these are the sperms which you can see. If I just use this isolation, so this is an isolation tool where you can also individually visualize all the cells. So क्योंकि मैंने isolation tool use किया तो हमें sperms दिख रहा है. And next if we like for example अगर हम दूसरे टूल्स को भी यूज करें, so this one. So if I just need to show you the cells only, तो the cells part is being seen. तो ये पूरा का पूरा जो seminiferous tubule होता है ना, it's a collection of cells basically हम बोल सकते हैं. ठीक है, जिसके थ्रू ये पूरा जो process है that is being worked out like this. Now let's move on to the description part of the seminiferous tubule that we have seen. Now you can see over here that the inner lining of each of the seminiferous tubule, which you can see over here, is is consisted of basically two types of cells. जैसे कि मैंने आपको already model में यहाँ पे explain किया हुआ था in this model कि इसमें हमें दो तरीके के cells मिलते हैं. One is spermatogonium and the other is the Sertoli cells. तो spermatogonia आपके immature male germ cells को ये represent करेगा. So this is going to represent the immature male germ cells. And इनकी सबसे important खास बात ये होती है ना कि that they are already diploid in nature. So they will be having a total of 46 number of chromosomes. So they are diploid with a total of 46 chromosomes. ठीक है. And दूसरे cells जो important होते हैं वो हो जाएंगे Sertoli cells that provides nourishment or nutrition to the spermatogonium or the male germ cells. अब किसी सेल को डेवलप करना है तो उसको नरिशमेंट भी चाहिए. So that nourishment is provided by these Sertoli cells. That is the case. Now, one thing which is also very, very important in this figure are the interstitial spaces which you can see over here. अब यहाँ पे जो मुझे बताना है आपको इस मॉडल में वो हो जाएगा the spaces. Now, these spaces which you can see over here, ये वाले जो spaces आपको दिखते हैं ये आपके interstitial spaces हो जाएंगे. These are interstitial spaces. Now, interstitial spaces are those spaces that consist of blood vessels, जिसमें blood vessel होता है और जो कि ना Leydig cells के भी बने होते हैं. And all those Leydig cells or interstitial cells which are being found over here. All right, these dot-like structures which you can see over here, these are all the Leydig cells
that is being represented. तो इनका इंपॉर्टेंस ये होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो दो फंक्शंस के लिए होता है. तो एक तो ये स्पर्म भी प्रोड्यूस करता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड्रोजेंस, मतलब कि टेस्टोस्टेरॉन को भी रिलीज करता है, विच आर योर मेल सेक्स हॉर्मोन्स, उनको भी ये रिलीज करता है. तो दोनों फंक्शंस जो कि हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही होते हैं. So that's why it is very, very important. So interstitial spaces are being found over here, and interstitial spaces में seminiferous tubules के बाहर का रीजन है जो मैंने आपको स्पॉट आउट किया, देखा हम लोगों ने अभी मॉडल में, एंड ब्लड वेसल्स को कंटेन करेगा, एंड इट कंसिस्ट ऑफ interstitial cells or the Leydig cells. That is the case. Now Leydig cells are those cells that synthesizes and secretes the testicular hormones. As I already told you, these are going to secrete the testosterone. This is very, very important, which is the male sex hormone. It is testosterone, which is the male sex hormone. तो दो functions हम लोगों ने यहाँ पे अभी देख लिया. So we have seen the male reproductive system का testis वाला part and cross section of the seminiferous tubule. Now moving ahead with the 10. Now see, so testosterone is being secreted over here. Now, अब जो चीज नोट करने वाली बात है, we are going to talk about the ducts. मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑलरेडी डक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ था. यू नो, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अबाउट दोस डक्ट्स एंड उनके फंक्शंस क्या हो सकते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स. तो उसके केस में हमें जो चीज नोट करने वाली बात है वो ये कि एक्सेसरी डक्ट का फंक्शन ये होता है कि इट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द स्पर्म. जैसे स्पर्म अगर टेस्टिस में रिलीज हो रहा है, सपोज if the sperm is released in the testis or it is produced in the testis, so testis से outside body of the male अगर उसको जाना है, ठीक है ना, outside body of male अगर उसको जाना है, so there is a pathway through which it has to follow. कुछ ducts होते हैं जो ये क्रॉस करता है और तब वो मेल बॉडी के बाहर जाता है, जो कि उसको उसकी बेसिकली हेल्प करते हैं. इनडायरेक्टली वी कैन से दैट जो उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है. तो इसमें अगर हम देखेंगे ना, तो ये जो डक्ट्स होते हैं ये बेसिकली हेल्पर डक्ट्स होते हैं which will help in the transportation process. So there are 4 sequential duct that you people have to remember, and that is retitestis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens. और ये पूरा सीक्वेंस में रहता है. हाँ, टेस्टिस के बाद जो आपका सीक्वेंस आएगा, दैट मीन्स अगर मैं एक सीक्वेंस में लिखूं तो टेस्टिस विल कम फर्स्ट. From the testis, it is retitestis. इसके बाद आपका retitestis आता है. Retitestis के बाद there is vasa efferentia. Vasa efferentia को in some books or in some text it might be written as efferentia or efferenductules भी बोलते हैं उसको. So this is vasa efferentia, you can say. Then there is epididymis, very important. All right, and then there is vas deferens. This is the case. तो ये सीक्वेंस है. नीट में कई बार ये सीक्वेंस पूछा भी है that what is the sequence of the excessive duct. So you people need to remember all these things very, very well. All right, ये चीज हो जाएगा. अब the next important point is that मैंने इसके छोटे छोटे एक key points बनाए हुए हैं, as you can see, that is going to correlate with all these things. So like retitestis की अगर हम बात करें तो ये connect करेगा seminiferous tubule को testis से vasa efferentia से. It's a connecting tube ना, retitestis to vasa efferentia. Then vasa efferentia is going to be connected vasa efferentia actually connects the retitestis to epididymis, and then epididymis is ultimately connected to the vas deferens. Now vas deferens is also known by another name. As you can see, vas deferens को कुछ cases में ना sperm duct भी हम consider करते हैं. So in some books you might find it, or in some text you might find it as sperm duct. So this vas deferens is also considered to be as sperm duct. That is the case. Now this vas deferens is the final duct which will open ultimately into urethra. This is going to open
into that loops this vas deferens, that means sperm duct. हम लोगों ने already देखा हुआ था मॉडल में कि किस तरीके से उसकी लूपिंग होती है यूरिनरी ब्लैडर में, एंड यूरिनरी ब्लैडर से लूप होते हुए, दैट मीन्स एक क्रॉसओवर होते हुए वो एक डक्ट को रिसीव करेगा seminal vesicle से, and ultimately that will ultimately go into urethra as in the form of ejaculatory duct. Now ejaculatory ducts are the ducts that actually helps in the in storing also, and it is the final duct you can say. मतलब अगर मैं accessory ducts के एकदम last component की बात करूं तो accessory duct का एकदम last component ejaculatory duct होता है, जो कि ultimately आपका finally उसको store करेगा outside and उसको store करके रखता है until and unless उसका जब तक nourishment नहीं हो जाता, and ultimately उसको फिर outside the body through urethra उसको वो बाहर निकाल देता है. So that is the case. So this was all about your accessory ducts that we have discussed. All right. Now, urethra, it's a kind of a thin muscular tube, जो कि मैंने आपको already show किया था. It is directly in connection with that of the urinary. इसका origination जो होता है urethra का, वो urinary bladder से हो रहा था, जो मैंने आपको model में show किया. And then it ultimately leads to penis. पेनिस से होते हुए यूरिथ्रल, और इसका जो एक्सटर्नल ओपनिंग हो जाएगा, जो एकदम एंड वाला ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड एज यूरिथ्रल मीटस. सो लास्ट कंपोनेंट आ गया वहां पे. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द डक्ट. ये पूरे डक्ट के बारे में था. नाउ लेट अस जस्ट हैव अ लुक ओवर द एक्सेसरी ग्लैंड्स. नाउ ग्लैंड्स की जब हम बात करते हैं तो तीन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं दैट वी हैव सीन. दे आर योर सेमिनल वेसिकल्स, prostrate gland, and bulbourethral, which is also called as Cowper's gland. All right. So to important point to note is that कि seminal vesicles paired होता है, prostrate gland is unpaired, मतलब ये सिर्फ एक ही होता है, and this bulbourethral gland is also paired. अब क्योंकि ये gland है तो जो नोट करने वाली बात है वो ये कि ये सारे के सारे ग्लैंड्स जो होते हैं ये सिक्रीशन का काम करेंगे, है ना. मतलब ऐसे सिक्रीशंस कराते हैं which is ultimately going to nourish the sperm, और ये सेमिनल प्लाज्मा को कॉन्स्टिट्यूट करता है. यू कैन से दैट पार्ट एज वेल, ऐसे हो सकता है. ठीक है, सो आई हैव रिटन हियर इट आल्सो, यू कैन से, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है like that the secretions of all these glands constitutes the seminal plasma over here. Now what are the constituents that is being present in the seminal plasma? This is very, very important. Now, seminal plasma is rich in fructose. This is very important. Calcium and enzymes as well. All right. And of course, क्योंकि भाई प्लाज्मा है और स्पर्म्स तो मेन ही कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें, तो उसमें आपका स्पर्म्स होगा ही. तो these are the main components or constituent you can say of the seminal plasma. Now, apart from this, there are two other components as well, which is being found. One is called as prostaglandins, and the other is called as fibrinogen. Now, fibrinogen is a coagulating factor. Fibrinogen जो होता है, ये हम blood coagulation में भी पढ़ते हैं कि ये ना coagulation में help करता है. So this is going to coagulate semen. And on the other hand, prostaglandins जो होते हैं, ये reverse peristalsis को promote करते हैं vagina में, and uterus of the sperms को करते हैं. ठीक है, सो दैट जो स्पर्म्स का मूवमेंट है ना वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए. इट शुडंट बी बाई डायरेक्शनल. रिवर्स पेरिस्टाल्सिस कहने का मतलब ये इट शुड बी इन सिंगल डायरेक्शन ओनली, ऐसा होना चाहिए. दैट इज द केस. ना ये अब इसमें प्रोस्ट्रेट ग्लैंड के सिक्रीशंस एंड बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के भी सारे दिए हुए हैं. प्रोस्ट्रेट ग्लैंड का स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड होता है या कंडीशंस होते हैं that helps in the survival of sperms as well in the acidic vaginal environment. Bulbourethral glands की जब हम बात करते हैं तो इनके ग्लैंड के सिक्रीशंस जो होते हैं वो पेनिस को ल्यूब्रिकेट करता है एंड इट न्यूट्रलाइज करता है एनी एसिडिटी व्हिच इज प्रेजेंट इन द यूरेथ्रा. सो दैट इज द केस. मतलब कहने का ये कि एनवायरनमेंट जो होता है इन ग्लैंड्स से जो सिक्रीशंस निकलते हैं वो एक ऐसा सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ना जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि वो एक न्यूट्रल काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. ना बहुत ज्यादा एसिडिटी होना, ना बहुत ज्यादा एल्कलिनिटी होना. इट हैज टू बी अ वेरी मीडियम काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट और न्यूट्रलाइज्ड काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट दैट हैज टू बी मेंटेन्ड. सो दैट इज द केस. Now the last part, if you're going to see, is the male external genitalia.
and that is your this one, which is the penis part. Now penis का जो loose skin होता है, that is called as foreskin or prepuce, and its enlarged portion is called as the glans penis, which we have already seen in the model. हम लोगों ने जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसके मॉडल में ऑलरेडी ये चीज देखा, that how this entire portion is being found. All right, so this is all about the accessory glands, the accessory ducts, and your male external genitalia penis, and of course your section of the seminiferous tubules that we have seen. Now let us just move on to the next very very important topic, and that is called as your gametogenesis. Now gametogenesis में भी अब क्योंकि देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स बन रहे हैं, ये हम लोगों ने देखा कि स्पर्म्स बन तो रहा है, देयर आर मेनी ऑफ द सेल्स आल्सो बीइंग इन्वॉल्व. तो अब अगर सेल्स इन्वॉल्व है तो वो प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे होता है, हाउ इज दिस एंटायर प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज दैट कि मेल्स में जब हम देखते हैं, और हमें जो अभी फोकस रखना है, हमें oogenesis का नहीं पढ़ना है, वी ओनली हैव टू टॉक अबाउट दिस स्पर्मेटोजेनेसिस. हमें सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस को टारगेट करना है. नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस इज वन सच प्रोसेस एज द वर्ड इज सजेस्टिंग, स्पर्मेटो एंड जेनेसिस. सो द वर्ड्स कैन बी स्प्लिट, है ना, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं. So इसका मतलब हो जाएगा sperm formation. So this is in simple language that we say it. All right. So it's a process by which the immature male germ cells or the spermatogonia, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया and we have seen it also, तो वो जो होता है ना वो sperms का प्रोडक्शन कराएगा किधर, टेस्टिस में. That is called as your spermatogenesis. So that is the case. ठीक, so let us just start with that part. Okay, now this is the एक diagrammatic section आपको दिख सकता है on your right hand side of the screen, and इसमें आपको पूरा जो प्रोसेस है उसका वो एक्सप्लेन किया हुआ है. ऑल राइट, एंड मैंने तो आपको ऑलरेडी एक जिस्ट के फॉर्म में ऑलरेडी बता दिया था कि कैसे कैसे सेल्स बनते हैं. द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो ये कि जो प्रोसेस होता है ना स्पर्मेटोजेनेसिस का, दैट स्टार्ट्स विद दिस स्पर्मेटोगोनिया. ये ना स्पर्मेटोगोनिया से शुरू होता है, ठीक है, जो कि इमेच्योर मेल जर्म सेल्स हैं एंड विच आर यूजुअली डिप्लॉयड. ये हम लोगों ने देखा कि ये ऑलरेडी क्या है, डिप्लॉयड. दैट मीन्स इट इज हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, अब इसमें जो क्रोमोसोम्स जो इसमें प्रेजेंट है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज अ टोटल ऑफ 46. डिप्लॉयड है तो 46 ही होगा. ऑल राइट, तो ये चीज होती है. एंड वन थिंग टू नोट इन दिस प्रोसेस इज दैट कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ना वो प्यूबर्टी में ही शुरू हो जाता है. रिमेंबर दिस बिगिंस at puberty itself or at pubertal ages in the males itself. All right, now this spermatogonia का number ना बहुत ज़्यादा रहता है. So initially it will undergo a process which is called as mitosis differentiation. Initially it is going to divide mitotically to give rise to the very first cell which is called as your primary spermatocyte. मतलब ये जो स्पर्मेटोगोनिया था क्योंकि ये इमेच्योर था तो इसीलिए इसमें डिफरेंशिएशन हुआ, and that's why it got converted into mature cells which are called as primary spermatocytes. And since this is a mitosis differentiation, so ये जो primary spermatocyte है इसकी भी ploidy diploid होगी. This is also diploid. इसकी भी जो ploidy होगी वो diploid होगी. ठीक है, अब ये भी diploid हो गया और स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड हो गया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी डिप्लॉयड हो गया. अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है, नाउ इट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोटिक डिवीजन. तो इसमें बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब ये करेगा, व्हेन इट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो ये ना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है. सो दिस इज गोइंग टू गिव राइज टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. अब क्योंकि मियोटिक डिवीजन है, so we know that first meiotic division
जो पहला मियोटिक डिवीजन होता है वो एक रिडक्शन डिवीजन होता है, ये हमें मालूम है, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अगर रिडक्शन डिवीजन है, सो डेफिनेटली ये प्रोड्यूस जो कर रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हैप्लॉइड, ठीक है। मतलब 2n था तो ये n हो जाएगा, ठीक है। एंड the one thing to be noted over here is that like if I draw a pattern, अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा पैटर्न बनाऊं, तो this is your spermatogonium. स्पर्मेटोगोनियम डिफरेंशिएट करेगा तो वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पर बनाएगा, ठीक है। दिस इज योर स्पर्मेटोगोनियम, ऑलराइट। I'll just revise it again so that it will be there in your mind. तो इससे हमें 2 मिले, ठीक है, इससे हमें 2 मिलेगा, ये हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो जाएगा PS, ठीक। तो इससे हमें 2 सेल्स मिले, ठीक है, इधर, एंड ये दोनों के दोनों सेल्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को रिप्रेजेंट करना है, क्लियर, ये हो जाएंगे। एंड ये जो सेकेंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिप्लॉयड हो गया, स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड हो जा रहा है, एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो आपके हैप्लॉइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हो गया है हमारा रिडक्शन डिवीजन, सो यू कैन सी ओवर हियर। अब इसमें होगा सेकंड मियोटिक डिवीजन, तो जब इसमें सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा, सो दिस सेल विल प्रोड्यूस 2 सेल्स एंड दिस सेल विल प्रोड्यूस 2 सेल्स, तो इससे हमें टोटल 4 सेल्स मिलेंगे, a total of 4 cells will be formed, and these all 4 cells they are called as spermatids, ये हो जाएंगे spermatids। और ये आपका कौन सा डिवीजन हो रहा है, ये हो रहा है हमारा यहाँ पे, यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द सेकंड मियोटिक डिवीजन एंड दिस इज आल्सो हैप्लॉइड, ठीक है। तो जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकंड जो कि हैप्लॉइड हो गए, और फिर अल्टीमेटली आपका स्पर्मेटिड्स बनता है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, द नोट्स, एवरीथिंग। एंड यहाँ पे जो पैटर्न भी आपको दिख रहा है वही चीज मैं यहाँ पे बगल में मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है, इधर ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ, वही चीज मैंने ड्रॉ किया, ऑलराइट। सो दैट इज गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया एक्चुअली, ठीक है। तो ये टोटल आपके 4 स्पर्मेटिड्स बन गए, और ये जो चारों स्पर्मेटिड्स है, यू नो, ईच ऑफ दीज स्पर्मेटिड्स इज गोइंग टू डिफरेंशिएट इनटू इंडिविजुअल स्पर्म। सी, हर जो स्पर्मेटिड है वो एक इंडिविजुअल स्पर्म में डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला दैट up till the level of this primary spermatocytes, all right, just a second. So up till this level of this primary spermatocytes we have seen ki there are a total of 46 number of chromosomes are found, क्योंकि ये दोनों के दोनों डिप्लॉयड, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर के स्पर्मेटोजोआ तक यहाँ पर ये पूरे के पूरे जो क्रोमोसोम है वो 23 है, एंड ऑल दीज सेल्स आर हैप्लॉइड। दिस पॉइंट हैज टू बी नोटेड, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है through which the questions are regularly being asked. Now the question that arises in your mind is that, is there any process कि क्या कोई ऐसा process है जो कि you know through which it is being called, तो ये जो प्रोसेस है ना जिसके थ्रू स्पर्मेटिड्स आर गोइंग टू गेट कन्वर्टेड, यू नो, ये जो स्पर्मेटिड्स जो हैं these are going to get converted into spermatozoa, this process is called as spermiogenesis. Remember, इसको हम spermiogenesis बोलते हैं, जिसके थ्रू the spermatids are going to be differentiated. Now what do you mean by differentiation? Differentiation we all know that is the process of maturation. कोई भी सेल अगर अपने आप को मैच्योर करने की कोशिश करता है, so that is called as differentiation. Now spermatozoa, here it has been written spermatozoa, so spermatozoa is also known as sperm as well. So the other name of spermatozoa is sperm only. So do not get confused with the terminologies because both are relatable only. That is the case. So this is about your entire spermatogenesis that we have seen, that starts from the very first spermatogonia and ends up to the formation of the sperms. मतलब शुरू एक सेल से हुआ था, but it ended up to 4 cells. That means one. So इससे हमें ये भी पता चलता है that one single immature male germ cell is going to give rise to a total of 4 sperms.
एक स्पर्मेटोगोनियम से हमें 4 स्पर्म्स मिलते हैं. So this is about your this one, which is the process of spermatogenesis over here. Now let us just have a look. यहाँ पर एक मैंने एक और प्रोसेस आपको बताया हुआ है कि जैसे ही जब स्पर्म्स बनते हैं ना, once the sperms are actually formed. Wait. So once the sperms are formed, these sorry, these sperms are usually in a immature state. तो क्योंकि ये immature होते हैं ना, तो इनको nourishment provide करना बहुत जरूरी हो जाता है. So for the purpose of providing nourishment, है ना, nourishment के लिए these sperm cells और spermatozoa, their heads get embedded. हम लोगों ने ये फिगर में भी देखा था कि किस तरीके से स्पर्मेटिड्स जो थे उनका हेड जो था वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड था. ऑलराइट, सो नरिशमेंट के लिए ना ये जो स्पर्म्स होते हैं ना, देयर हेड गेट्स एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स, so that until and unless they are fully matured they won't be released. और जब ये fully mature हो जाएंगे तभी ये सर्टोली सेल से रिलीज होते हैं. So this process is ultimately called as spermiation. You can see over here. So there is a difference between spermiogenesis and spermiation. Spermiation is actually the release, final release of the sperm once they are matured enough and can carry out the process of fertilization. तो वो होते हैं. So this is also very students often get confused with these two terminologies, but be very specific and clear. Spermiogenesis and spermiation. Now वही चीज मैंने यहाँ पे एक डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाया हुआ है. You can see that we'll start with spermatogonia. All these things are there. This is very important for your, of course, for your NEET point of view, because यही से questions target होते हैं. We will be discussing the questions as well at the end of this session. Okay. Yes. So यहाँ पे जो मैंने आपको फिगर में ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है दैट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी. ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्यूबर्टी में बिगिन करता है. वही चीज यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है दैट दिस प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इट एक्चुअली बिगिन्स एट प्यूबर्टी. वही प्यूबर्टी में बिगिन होता है. And it is because there is one such specific hormone that is being released, और उसको हम बोलते हैं GnRH over here, which is gonadotropin releasing hormone. उसको हम consider करते हैं. Now this GnRH, इसके ना 2 hormones निकलते हैं. Remember, since this is gonadotropin, तो इसके 2 important hormones होते हैं. एक होता है LH और दूसरा हो जाएगा FSH. LH is your luteinizing hormone. This becomes your luteinizing hormone, and this becomes your follicle stimulating hormone, and each of the hormones have individual function. दोनों का ना बिल्कुल अलग फंक्शन होता है. जैसे ये जो luteinizing hormone होते हैं इनका फंक्शन ये है कि they are going to act on Leydig cells. So they act on Leydig cells. ये Leydig cells पर act करेंगे. तो अब क्योंकि ये Leydig cells पर act करते हैं तो हमें फंक्शन पता है ये Leydig cells का, that these are primarily responsible for synthesis and secretion of androgen. ये टेस्टोस्टेरोन का बेसिकली रिलीज करवाएंगे, है ना. तो ये जो Leydig cells होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन, ये LH जब Leydig cells पर एक्ट करता है तो ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा, which is the male sex hormone. But what about this follicle stimulating hormone? This follicle stimulating hormone is going to act on the Sertoli cells. ये ना Sertoli cells पर एक्ट करते हैं. Remember this, दोनों का फंक्शन अलग है and independent है. So this is going to act on the Leydig cell and this is going to act on the Sertoli cells. Sertoli cells पे जब ये एक्ट करते हैं तो अब हमें मालूम है कि Sertoli cells नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. तो ये क्या करेंगे कि ये Sertoli cells पर एक्ट करके बेसिकली स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को प्रमोट करते हैं. सो स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन के प्रोसेस को ये बेसिकली प्रमोट करेंगे. दैट मीन्स देखो स्पर्मेटिड्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन है स्पर्म में वो तब तक नहीं होगा जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता. सो दे बेसिकली एक्ट ऑन Leydig cells, नरिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे
FSH will act on the Sertoli cells and ultimately they will promote for the process of spermiogenesis. तो हम basically बोल सकते हैं कि ये जो spermiogenesis का process है वो indirectly controlled है through FSH. FSH के अंडर में ही इसकी process पूरी की पूरी controlled होती है. Since this is a follicle stimulating hormone, तो वो follicles को stimulate करेगा so that the synthesis and secretion of nourishment can be done inside it. So this is the case of the hormones. That means the roles. So we have seen two things. हम लोगों एक बार quick recap कर लेते हैं. तो हम लोगों ने basically देखा इसमें कि how the process of this spermatogenesis goes on, है ना? ये पूरा process spermatogenesis का कैसे होता है and how these cells are being involved. And apart from this, we have seen the chromosome number that are present in each cell and end में हमें फिर ultimately sperm मिल जाता है and the two hormones which are primarily being involved over here. So that is the case. Now let us just have a look on the another model that we are going to see actually. हम लोग देखते हैं. It's being loaded. तो पूरा जो ये process है मतलब male reproductive system का, इसमें हमारा पूरा जो entire process है, it is not only covering the male reproductive system but it is covering the entire section as well. ऐसा है. We will be also discussing the questions as well at the end of this session so that it will be useful. All those previous year's questions as well. Once this is done, we will also be having a quick recap of whatever the things, we'll just recall all the things, whatever that we have done. Okay, now, fine. So, you can see the structure or model of sperm that is very, very, very unique. And if I just like maximize this part, so we will be, the structure of sperm is also be there for the explanation as well. So basically पहले मैं labeling आपको बता देती हूँ कि what are the different components of sperm, and then we will individually discuss all the functions of all these components as well. Now see. So this part, which you can see, firstly, I'll tell you that sperm, the entire sperm structure, which you can see over here, it is basically divided into 3 distinct parts, all right? Or rather, we can say 4 distinct parts, all right? So this is your head part. This portion, which you can see, this represents your head part. This portion, which you can see, represents your neck part. This is the neck portion. This portion is the middle piece. This one is your middle piece. And of course, this one is the tail part, like this. So the entire sperm structure is primarily divided into, it is primarily divided into 4 distinct components, you can say. That means head, middle piece, neck, and tail, like this. All right, this is the part. Now, if we just individually see that what are the different components in head or middle piece and all those things, so we will be seeing all those parts as well. Yeah. So this one is your acrosome, basically. This one is basically your acrosome. And this one
is the nucleus. Now, what is acrosome? We will be discussing this as well. Acrosome is one of the important components of head, and the reason for this is that basically so acrosome is basically one such component, one of the important components, in fact, of all the of all the because it contains all the enzymes, all the important components. So ये जो acrosome होता है ना, ये this is the first part to phase the ovum, है ना, क्योंकि इसको egg के साथ fertilize करना है, ovum के साथ fertilize करना है, तो ultimately इसका main function ये होता है कि ये enzyme से filled up होता है, ठीक है. और ये दो एंजाइम्स इसमें प्रोमिनेंट होते हैं, वन इज योर एक्रोसिन एंड द अदर इज योर हाइल्यूरोनिडेज, जिनका फंक्शन ये होता है दैट इज गोइंग टू लाइज द एग मेम्ब्रेन को या ओवम के मेम्ब्रेन को ये लाइज करने में हेल्प करता है, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन में बेसिकली हेल्प करेगा. ऑलराइट, नाउ this portion, middle portion, which you can see consists of centriole. This is the centriole. And if I just maximize this part a little bit over here, like this. So this one becomes your mitochondria. These are all your mitochondria. ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा. तो ये वाला पार्ट हमारा सेंट्रियल हो गया. तो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. नाउ मिडिल पीस, सिंस मिडिल पीस कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो होता है दिस वन बिकम्स योर टेल पार्ट, which is responsible for movement or motility, you can say, है ना, मूवमेंट और मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो जो ये मूवमेंट आता है टेल को, दिस इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द एटीपी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, तो वहां से इनको मूवमेंट मिलता है. सो द मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, द ग्रेटर विल बी द मोटिलिटी और द मूवमेंट ऑफ द टेल, of the sperm that will be there. This is the case. All right. So these are the important components of the, you can say, sperm that we have seen, like this. All right. Now let us just move ahead with a little description part. Now, so you can see over here that I have drawn a figure also of a generalized figure of the sperm as well. And sperm basically, as I already told you, that it consists of 4 different parts: head, neck, middle piece, and tail. And the entire body of this sperm is covered up by plasma membrane. That is very, very important. All right. And head portion, as I already told you and have made you people show the component, तो उसमें न्यूक्लियस होता है और एक्रोसोम होता है. ये 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है. एक्रोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एंजाइम से फिल्ड अप होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, विच इज फिल्ड अप विद 2 लाइसिन एंजाइम्स, क्योंकि वो एग मेम्ब्रेन को जाके लाइस करेगा और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा. सो हाइल्यूरोनिडेज होता है और एक्रोसिन होता है. दिस इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू शुड रिमेंबर द फंक्शन बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट. सो इट इज फिल्ड अप विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट हेल्प्स इन डिसॉल्विंग द एग मेम्ब्रेन and also helps in fertilization of the ovum as well, ठीक है. फिर उसके बाद आपका आता है मिडिल पीस. तो मिडिल पीस जो होता है वो न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया को कंटेन करता है, जो मैंने आपको शो किया, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा एटीपी के फॉर्म में, सो दैट द मूवमेंट ऑफ टेल कैन बी डन. ये मोटिलिटी के लिए बहुत जरूरी है एंड इट इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन. सो दिस आई हैव ऑलरेडी मेड यू पीपल अंडरस्टैंड. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट कि जब भी इजैकुलेशन होता है, all right, for a normal process of ejaculation is being done, तो कभी भी एक ejaculation में a total of around 200 to 300 million sperms are being released, all right, and उसमें से at least 60% of them, this is a fact been given, that 60% out of all these 2 to 300 million sperms, it should have normal shape. Now the shape of the sperm is very, very important, all right, because shape अगर sperm का बराबर नहीं होगा, so this can result into defectiveness of the fertilization process. ये fertilization को proper नहीं करवा पाएगा. Might be possible कि egg membrane ही dissolve नहीं हो रहा है, या कुछ भी complications आ सकते हैं.
So it should have a normal shape. And at least 40% ऐसे होने चाहिए जिनमें मोटिलिटी होना चाहिए. So वो they should be properly movable. क्योंकि अगर वो मूव नहीं करेंगे, उनमें उतनी एनर्जी नहीं होगी मूवमेंट की, तो अल्टीमेटली दे विल रिजल्ट इनटू दे शुड शो दिस नॉर्मल मोटिलिटी. ऑलराइट, तो अगर क्योंकि वो मूव करके उस पर्टिकुलर टारगेट साइट पर नहीं पहुंचेंगे, तो वो पहले ही उसके डिसॉल्व हो जाएंगे. दे विल, वो जो जब जैसे ही यूट्रस का एनवायरनमेंट या जो वजाइनल एनवायरनमेंट उनको एसिडिटी मिलेगी वहां पे, सो दे विल बी न्यूट्रलाइज्ड ओवर देयर इटसेल्फ. सो दे शुड हैव दैट प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी एज वेल. उनमें उतना अमाउंट ऑफ मोटिलिटी भी होना चाहिए, एनर्जी भी होनी चाहिए, सो दैट दे कैन आउटरीच टुवर्ड्स द एग व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द this one fallopian tube, जो कि रिलीज होके fallopian tube में आता है फीमेल के. So this is very very important and it's a fact. All right, so this is all about the for the entire components that we have discussed. All right, now from this part the questions are being started now. So in this entire section and in this entire lecture we have discussed about a lot of things, like हम लोगों ने male and male reproductive system के location को, and let us just have a quick recap. एक बार मैं आपको show कर देती हूँ. Yeah, so हम लोगों ने male reproductive system को देखा and उसके different components को देखे हैं like this. All right, so we have seen the structure also, and we have seen the spermatogenesis वाला seminiferous tubule का सबसे पहली बात तो section देखा model के through like this, you can see over here. And उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि क्या क्या कौन कौन से cells हो सकते हैं which are primarily responsible, the ducts, the glands, and the ultimately your external genitalia part that is being found. And of course the main important process जो कि sperm बनाता है, which is a spermatogenesis, that we have seen, because without which this entire process is incomplete. So हम लोगों ने chromosome numbers and वो सारी चीजें देखी. Then we have also seen the hormones that regulate the spermatogenesis process. कौन से hormones उसको regulate करते हैं. And finally we have seen the structure of the sperm over here, which you can see कि हमें पूरा का पूरा जो sperm का structure होता है वो head, neck, middle piece and tail में divided होता है. ठीक है. And these are all the things that we have discussed. So this was all about male reproductive system that we have seen. Now let us just discuss some of the examples, some of the questions that has been asked in a previous previous years of your NEET examination. Now there's a question given below which you can see that ये कुछ एक figure है, and you have to label all the different components. ठीक है. That what is the A component, what is the B component, C and the D component. So इसमें आपको दिख रहा है कि A component तो हम लोगों ने already model में देखा था, that A indicates your vas deferens. So A is basically a vas deferens जो कि आपका sperm duct हो जाएगा. ठीक है. This is a figure of the male reproductive system which you can see, है ना, और हमें correct वो बताना है. So this is basically a vas deferens which you can see. B structure has also been indicated in the model which we have already seen, and that is your seminal vesicles, है ना, क्योंकि ये paired होते हैं. So you can see इसके दो pairs यहाँ पे present है. One is this one and the other is this one over here. दो है total. तो इसीलिए B represents your seminal vesicle over here. C is your basically C represents your prostrate gland because it is an unpaired gland. So ये भी हम लोगों ने देखा था. It is a single gland over here. So this is a prostrate gland. And of course the last gland becomes your bulbourethral gland over here, है ना, जो एकदम D में बता रहा है. So it's your bulbourethral gland which is also paired. ये भी आपका paired ही होता है. Bulbourethral gland. All right. So if you're going to match with the options, so it is vas deferens, seminal vesicles, prostrate, and then bulbourethral gland. So the very first option is also is in fact the correct option. So this is the this kind of questions, diagrammatic questions can be asked in your examination. Now moving on to the next question. Like for example, this in this question it has been asked that in humans at the end of the first meiotic division,
the male germ cells differentiate into. So this we have already discussed. ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लोगों ने ऑलरेडी स्पर्मेटोजेनेसिस वाले प्रोसेस में देखा था. तो हम लोगों ने देखा कि जो स्पर्मेटोगोनिया था, है ना, स्पर्मेटोगोनिया गॉट डिफरेंशिएटेड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, है ना. और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, तो वो फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज होता है. और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, दैट चेंजेस इनटू स्पर्मेटिड्स. ऑलराइट. सो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन the male germ cells are going to differentiate into. So at the end of first meiotic division, so this is the first meiotic division, and the end result of first meiotic division are the secondary spermatocytes. तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, that will be your secondary spermatocytes. So this is the case, है ना. उसके बाद नेक्स्ट है that this is a very easy question you can say. ये थोड़ा इजी क्वेश्चन में आ जाएगा जो कि हम टारगेट कर सकते हैं. सो द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेन्स विच ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स. तो जो मिडिल पीस होता है इट यूजुअली कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया. सो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन दैट. न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया दे आर बीइंग फाउंड इन द मिडिल पीस एज वेल. ऑलराइट. ये जो सेंट्रियोल वाला पार्ट जो हम लोगों ने देखा था, दिस इज बेसिकली फाउंड इन द नेक पोर्शन. रिमेंबर दिस. ये जो होता है ना, ये नेक पोर्शन में होता है. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि ये मिडिल पीस में होगा. ये ना नेक का मतलब ये हेड का, और दिस इज बेसिकली बोल सकते हैं कि ये हेड और मिडिल पीस के बीच का पोर्शन होता है, क्योंकि तो इसीलिए ये नेक के पोर्शन में होता है. ऑलवेज रिमेंबर कि मिडिल पीस इज कंसिस्टेड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया while the centriole is a part of neck part of the sperm. Alright, so altogether we can say कि ये easy भी question है, but it is a little tricky also because students might get confused कि इसको उनमें confusion हो सकता है कि भाई mitochondria भी होता है, centriole भी होता है. So that's why. But the correct answer and the correct option is your mitochondria over here. Alright, now the next questions if you are going to look into, yeah, okay. So the next question says that which of the following depicts the correct pathway of the transportation of sperms? Exactly. So जैसे ही मैंने आपको बताया था कि it's a recent question that has been asked in a NEET examination 2016 में ही पूछा है. All right. And इसमें आपका sequence पूछा है. तो मैंने आपको already बोला है, sequence भी आपको explain किया हुआ था कि what is the exact sequence of the entire pathway or transportation of the sperms. So basically इसमें आपका जो सीक्वेंस हो जाएगा वो ये कि इट कंसिस्ट ऑफ विल अगर मैं एक यहाँ पे एक जनरलाइज ड्रॉ कर दूं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा. सो इट विल स्टार्ट विथ टेस्टिस, देन रेटिटेस्टिस, देन अल्टीमेटली योर वासाइफेरेंसिया, it's वासाइफेरेंसिया, देन एपिडिडाइमिस, and then ultimately vas deferens, है ना. ये होता है sequence. So if you are going to look into the sequence, तो पहला अगर हम देखें तो it is retidestis, then efferent ductules. ना यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये जो वासाइफेरेंसिया होता है इसी को हम efferent ductules बोलते हैं. ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ था, इनफैक्ट बताया भी है कि कुछ बुक्स में, कुछ टेक्स्ट्स में आपको ये efferent ductules के फॉर्म में भी मिलता है. एज द वर्ड efferent इज सजेस्टिंग, तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हो लाइक दिस. कंफ्यूजिंग नहीं है, बट थोड़ा सा एक कॉमन सेंस हमें यूज करना है and everything will be sorted. So efferent ductules, then there is this one becomes your epididymis and then vas deferens. ऐसे दिया हुआ, ठीक है. So हमें ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट मिल गया. ऑलराइट. अदर ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो इसमें रेटिटेस्टिस दिया है, फिर उसके बाद ये एपिडिडाइमिस दे दिया है, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग. ठीक है. रेटिटेस्टिस, वास डेफरेंस, efferent ductules एंड एपिडिडाइमिस, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि रेटिटेस्टिस के बाद डायरेक्टली आपका वास डेफरेंस आ गया. सो दिस इज आल्सो रॉन्ग. एंड यहाँ पर तो सबसे पहले efferent ductules ही आ गया. सो दिस इज आल्सो रॉन्ग. द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन. ऑलराइट. नाउ the next question says that the shared terminal duct of the reproductive and urinary system in the human male. All right. तो हमें ऐसे डक्ट के ऐसे डक्ट के बारे में बताना है
जो कि कॉमन डक्ट है. शेयर्ड मीन्स अ कॉमन डक्ट, जो कि रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम दोनों के लिए है. सो दिस इज अ वेरी यूनिक क्वेश्चन. ऑलराइट, और ये आप फिगर के थ्रू जो मैंने मॉडल आपको शो किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें यूरिथ्रा वाज द urethra was the duct which was being shared as a common duct. ये common duct में आपका आता है. all right, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट निकला था वो यूरिथ्रा था, एंड यूरिथ्रा इज बीइंग शेयर्ड एज वो क्योंकि वो यूरिनरी ब्लैडर से आता है, तो आपका यूरिनरी सिस्टम का भी कंपोनेंट हो जाता है. एंड यूरिथ्रा से ही आपका अल्टीमेटली सेमिनल वेसिकल्स के भी कंपोनेंट यूरिथ्रा से ही पास करते हैं अल्टीमेटली इन द फॉर्म ऑफ इजैक्यूलेटरी डक्ट. तो इसीलिए इसमें आपका यूरिथ्रा हो जाएगा, which is the common terminal duct in case of this one. So this is the case. Now moving on to the next questions. Okay, this question says that the Leydig cells as found in the human body are the secretory source of. Now this we have discussed for a couple of times. ये हम लोगों ने दो चार बारी इनफैक्ट इसको डिस्कस भी किया कि लेडिक सेल्स जो होते हैं दे आर द सिक्रीटरी सोर्स ऑफ एंड्रोजेंस. एंड्रोजेंस में भी क्या ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं. So this we have discussed a couple of times in the notes, in the figures, and in the diagrams also. All right, this is the case. Now, the next question says that if for some reason the vasa efferentia gets blocked, like अगर हम ये सपोज करें कि कुछ रीजन के वजह से वासा एफरेंसिया ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम अगर उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो गैमेट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम. गैमेट्स किधर से किधर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा. सो दैट इज द केस कि अगर हम ब्लॉक करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कहां से कहां नहीं होगा. तो अब मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको वो जो डक्ट मैंने बताया हुआ है, जो सीक्वेंस बताया हुआ है, दैट इज सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी विल अगेन राइट इट आउट. मैं फिर से लिखती हूँ. वी विल स्टार्ट विद रेटिटेस्टिस. रेटिटेस्टिस के बाद पहले तो टेस्टिस ही था, ठीक है. मैं फिर से आई जस्ट नोट इट आउट. रेटिटेस्टिस टू रेटिटेस्टिस, then there is vasa efferentia, then your epididymis, then ultimately it is your vas deferens. ये सीक्वेंस है. तो अगर हम इसको ब्लॉक कर दें, अगर हम इस वाले को वासा एफरेंसिया को अगर हम ब्लॉक कर देते हैं, तो हमारा स्पर्म्स का ट्रांसपोर्टेशन, दैट मींस गैमेट्स का ट्रांसपोर्टेशन कहां से कहां नहीं हो पाएगा. सो इज इट फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस? सो इज इट फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस? हाँ, बोल सकते हैं कि हमारा ब्लॉक हो जाएगा. इज इट फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू वास डेफरेंस? सो इज इट फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू वास डेफरेंस? नो. क्यों? क्योंकि वासा एफरेंसिया इन दोनों के पाथवे में आ ही नहीं रहा है, तो ये होगा ही नहीं. सो दिस इज रॉन्ग. सो इज इट फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस? प्रैक्टिकली नो, क्योंकि ये तो भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ओवरी टू यूट्रस का पॉइंट ही नहीं होता. And last option, which is your vagina to uterus, this is also wrong, क्योंकि ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंपोनेंट की बात हम कर रहे हैं. दिस इज नॉट द मेल वन. सो प्रैक्टिकली हमारा जो आंसर होगा इसमें वो हो जाएगा टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस. दिस इज द मेन आंसर. ऑलराइट, सो दिस इज द केस व्हिच यू कैन सी. सो ये हो गया. नाउ द लास्ट टू क्वेश्चंस दैट वी हैव टू डिस्कस इज दैट कि जो हमारा है वो ये. This question says that the testes in the humans, they are situated outside the abdominal cavity, inside a pouch, which is called scrotum. Now, the purpose is served for what? ये मैंने आपको lesson के the very first जो slide था उसमें ही आपको बताया कि scrotum में होना क्यों जरूरी है. And without any kind of doubt, सिर्फ एक ही चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, so that कि scrotum का temperature low maintained हो, and it will be responsible for the process of spermatogenesis. So the process is served for maintaining the scrotal temperature lower than the internal body temperature. Option A. Option B says escaping any possible compression by the visceral organs. Wrong. ये ऐसा हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है. Providing more space for the growth of epididymis. Wrong. Providing a secondary sexual feature for exhibiting the male sex. Wrong. So this one is your
correct answer that we have already seen and studied. ठीक है, ये हो जाएगा. Now the next question says that Sertoli cells कहाँ मिलेंगे? Where are the location of the Sertoli cells? So Sertoli cells हमने देखा था भाई कि Sertoli cells जो होते हैं, these are usually found in case of your seminiferous tubule. आपको जब मैंने सेक्शन बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, तो उसी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि उसमें दो सेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा हो जाएगा सर्टोली सेल्स. ऑलराइट, सो अनडाउटेडली इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द मेल जर्म सेल्स. ऑलराइट, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस that are related to your male reproductive system and that has been purposely being asked in your NEET examination as well. तो basically हमारा ये है कि हमारा ये पर्पस है कि हमें जो कंटेंट है बहुत क्रिस्प करके रिवाइज करना है, so that everything will be there in our mind for a longer period of time, you can say. So that is our purpose, you can say. All right. Now, this was all about the male reproductive system that we have discussed and we have seen. So this completes our entire male reproductive system. Now, I just want to brief you a little bit about this entire learning process that we are learning, and you people can see on your screen कि किस तरीके से ये सारी चीजें, ये सारे टेक्नोलॉजी वर्कआउट कर रही है, so that it is helping us out in carrying out our function and in our, it is a very very important purpose for for competitive point of view. So ये थोड़ा सा टेक्निकलिटीज की वजह से स्टार्टिंग में नहीं हो पाया था, बट आई विल जस्ट ब्रीफ यू अ लिटिल बिट अबाउट दिस, that what is actually Perceiv. So Perceiv learning is one such mode of an online education platform where students get to learn about entire biology. They will be learning about entire biology through 3D models. All right, and 3D models ऐसे मॉडल्स हैं, 3D मॉडल्स वी नो दैट अगर कोई चीज टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाती है तो वो मॉडल्स किसी भी कॉन्सेप्ट को, बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट को, उसको स्टडी करना दैट बिकम्स वेरी वेरी कन्वीनियंट एंड इजी. सो इससे दो फायदा होता है. एक तो ये कि हमारा जो कॉग्निटिव लोड है, दैट मीन्स जो प्रेशर रहता है हमारे ब्रेन को कि इतने कंटेंट को रखना है, इतना चीजें रिटेंशन करना है, इतना सब कुछ याद करना है, देयर आर अ लॉट ऑफ 38 चैप्टर्स दैट हैव टू गो थ्रू, उन सब का प्रॉब्लम नहीं आता. सो मिनिमाइज होता है, तो वो जो कॉग्निटिव लोड है ना, दैट गेट्स मिनिमाइज्ड. क्यों? क्योंकि मॉडल से जब हम चीजें पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट एंड इजी हो जाता है, वो चीजें हमारे दिमाग में रिटेंशन के फॉर्म में बहुत ज्यादा रहती है. सो दैट इज द केस. एंड दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज गोइंग टू इम्प्रूव योर कॉन्सेप्ट ऑल्सो, एंड इट इज एंड दोज कॉन्सेप्ट्स विल बी रिटेन इन योर माइंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज वेल. तो ये दोनों काम करता है. ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स के थ्रू ही हो सकता है जो आपको यहीं पे मिलेगा. दैट इज द केस. ऑलराइट, एंड जो मोटिव कैरी ऑन होता है परसीव का, वो होता है दैट यू शैल हैव टू डू इट एंड यू हैव टू लर्न इट एज वेल. तो इसी मॉडल्स के थ्रू आप कर भी लेंगे और साथ साथ आपका लर्निंग प्रोसेस भी चलेगा. तो ऐसा नहीं होगा कि आप दैट यू आर लैगिंग बिहाइंड और यू आर लैगिंग बिहाइंड समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. So this is going to create a kind of an easy environment, a very a kind of a very conducive environment, you can say, so that आपकी learning भी हो जाएगी, आपको अच्छा भी लगेगा, you will enjoy it as well, and those things are going to be retain in your mind for a longer time and for a longer duration. So this is the motive of Perceiv learning through 3D models, 3D live classes. Now, so as you can see that how this Perceiv interactive live class is actually different. So you can see that basically दो तरीका होता है. ठीक है, there are two ways through which it works out. एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो लाइव क्लास चल रहा है वीडियो प्लेयर का, जो कि मैं लूंगी, जो भी ट्यूटर है वो लेगा. तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे जो भी कर रही हूँ, दिस इज वो सारा वर्कआउट यहाँ पे होगा. ये जो पार्ट है आपको जो आपको नीचे दिख रहा है,
this is the 3D interactive interface for student. So this is actually, since this is for student, तो student ना side by side में उसको learn कर सकते हैं, उन models को साथ में डाइसेक्ट कर सकते हैं. मतलब जिस तरीके से मैं डाइसेक्ट कर रही हूँ या मैं आपको चीजें दिखा रही हूँ थ्रू डाइसेक्शन टूल्स एंड ऑल, यू कैन गो ऑन योर ओन वेज एज वेल, पूरे चीजों के साथ. सो दैट्स हाउ ये इंटरैक्शन जो है ना वो 1-to-1 एस्टैब्लिश हो रहा है. this is an interaction which is establishing into 1-to-1 manner, with the teacher as well and with the student as well. तो ऐसे चीजें इसमें वर्कआउट करेंगे. Now, apart from this, what are the important things that you will be getting in the form of Perceiv3D notes, that means NEET notes. तो इसमें आपको जो notes हैं 3D interactive notes वो मिलेगा, जो कि आप लोगों ने अभी देखा ही, मैंने आपको मॉडल्स के थ्रू सारी चीजें बताई. तो उसमें हैंड रिटन नोट्स एंड सारी चीजें तो आपको मिलेंगी ही. हैंड रिटन नोट्स हो गया या वो इंटरेक्टिव नोट्स होंगे. ऑलराइट, एंड इट इज हैविंग एन ऑटो रीडर मोड. सो बेसिकली क्या होता है कि देयर इज एन ऑप्शन ओवर हियर व्हिच यू कैन सी. ठीक है, इसको क्लिक कर दिया तो कोई भी पर्टिकुलर, अगर जैसे ऑर्गन और कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन को अगर हम लेबल करना चाहते हैं या पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम लेबल करना चाहते हैं ना, तो इफ यू जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, सो यू विल बी हैविंग एक ऑटो रीडर मोड ऑन हो जाएगा और वो आपको सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर देगा. सो दिस इज द पिक्यूलियरिटी, दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक यू कैन से कॉन्सेप्ट जो कि यहाँ पे आपका परसीव लर्निंग में मिलता है. So that is the case, and all these notes which you can see over here, all these notes will be there in your pockets as well. तो ये इतने छोटे छोटे नोट्स के फॉर्म में रहेंगे तो पता चलेगा कि आप यू कैन लाइक कैरी, क्योंकि ये फोन में रहता है तो आप कभी भी ओपन करके वेबसाइट पे जा करके चीजों को बहुत ही फ्रीक्वेंटली उसको हैंडल कर सकते हो. सो दैट इज द केस विद दिस पार्ट. ऑलराइट, एंड या सो this is the next portion. So these are all the things that you will be getting, short notes and all those things with the associated labels and 3D interactive interface. This is all the things that is how it is going to work. And ultimately, lastly, we can say that we are going to launch 75 days of crash course in the name of DISSECT NEET model, as you can see. So I am going to be, so my name is Ankita Rai, all right. And we will be and apart from me there is another ma'am who will be handling the biology course of this crash course, and that is Sushmita ma'am. So we both are going to handle it. So I am having an experience of 5+ years in this NEET batch, and I have qualified a lot of competitive exams as well, and state level and national level, in fact, exams as well. So my expertise is definitely going to help you out in cracking your examination. So in this 75 days of crash course, we will be providing you with class 11 and 12 complete syllabus. Then daily live classes will be there, 3D interactive notes, physical notes and materials will also be provided, and strategy and guidance will be there in the live classes itself, along with that mock paper. All right, so that is the case. So this is all about it, and this we will be giving up in a nominal range of 750, in which you can enroll. So thank you very much. So this is all about it. So नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन सारी चीजों को, अलग अलग मॉडल्स को, अलग अलग टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.